नमस्कार। स्वागत है आपका आपके क्लास में। चलिए, आज हम नई दुनिया में नहीं, पुरानी दुनिया में नए पोएट की बात करते हैं। पोएट भी पुराना ही है, बट एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न्ड ही इज comparatively new. And in the line of the younger poets of the romantic period, the third and the last one is not least, but last one is John Keats. जॉन कीट्स एक ऐसे पोएट हैं जो सबसे बाद में जिनका जन्म होता है, और अनफॉर्चुनेटली ही डाइड एट द वेरी यंग एज। बहुत कम उम्र पर ही उनकी जो है डेथ हो जाती है जॉन कीट्स। और इसीलिए यू कुड से दैट ही वाज द लास्ट रोमांटिक्स। रोमांटिक्स में उनका नाम भी जो है हम सबसे लास्ट में ही जनरली देखते हैं। He was born in 1795 and he died in 1821, just at the age of 25. Right, 25 की एज पर ही डेथ हो गई है जॉन कीट्स की। राइट, जॉन कीट्स वाज बेसिकली, जो उनकी एजुकेशन थी, he was not meant to be a poet, but he was a surgeon, he was a doctor, and he had started practicing his medical profession. और मेडिकल प्रोफेशन में उन्होंने डिग्री भी लिया था, मेडिकल प्रोफेशन में उन्होंने शुरू भी कर दिया था। और इनिशियली ही वाज अपॉइंटेड एज ड्रेशर, जिसको जूनियर हाउस सर्जन कहते हैं आज के डेट में। उनका वहां पर अपॉइंटमेंट भी हो गया था, बट he said that he is not interested in profession, instead he wants to be a writing शुरू कर दी। Right, in the primary phase of his career, early phase of his career, he was a very restless fellow. He kept on fighting, he believed in fighting, but when he became mature at the age of 19, he wrote a poem, the very first poem, that is imitation of Spenser. It was imitation of Spenser. This was his first publication, and then he wrote on solitude. And on solitude was published in the Examiner. और फिर यहाँ से धीरे धीरे जो है फेमस होना शुरू हो गए पोएट के रूप में। एंड थ्रू आउट हिज लाइफ ही रिमेन्ड अ पोएट। कैसे पोएट के रूप में जाने जाते हैं? जॉन कीट्स इज नोन एज अ सेंसुअस पोएट। सेंसुअस पोएट के रूप में जाने जाते हैं। राइट, सेंसुअस का मतलब आप समझ रहे होंगे। वॉइस में झरझराहट आ रही है? नहीं, वॉइस में बिल्कुल झरझराहट नहीं आ रही रेखा रानी। देयर माइट बी सम इश्यूज फ्रॉम योर साइड। राइट, फ्रॉम माय साइड एवरीथिंग इज फाइन। अदरवाइज ऋतुपर्णा, ललिता और सविता would have also complained, but since there is only one complaint, it means the problem is at your side. From my side everything is fine. और वो झरझराहट जो है, that is in my voice, not in the voice of my girl. I am not a melodious fellow. My voice is not very much symphonic, but it's a cacophony, and that cacophony you have been feeling. राइट, चलिए क्या बात कर रहे थे हम? जॉन कीट्स की बात कर रहे थे। जॉन कीट्स सेंसुअस पोएट के रूप में जाने जाते हैं, सबसे यंगेस्ट पोएट के रूप में जाने जाते हैं। एंड जॉन कीट्स इज नोन, जैसे वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है, ही वाज वर्शिपर ऑफ नेचर, एंड इन द सेम वे कीट्स इज कॉल्ड द वर्शिपर ऑफ ब्यूटी। कीट्स इज नोन एज द वर्शिपर ऑफ ब्यूटी, बट कीट्स किस ब्यूटी की बात करते हैं? दिस इज अ $1 million क्वेश्चन। कीट्स किस ब्यूटी की बात करते हैं? कीट्स
सेंसुअस ब्यूटी की बात करते हैं, किड्स स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात करते हैं, किड्स अर्थली ब्यूटी की बात करते हैं, और फॉर किड्स जो है ब्यूटी इज अ थिंग जॉय फॉर एवर, राइट। फॉर किड्स ब्यूटी इज अ थिंग जॉय फॉर एवर, एंड फॉर किड्स ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट्स यू नो, दैट्स ऑल यू नो एंड यू नीड टू नो, राइट। ब्यूटी ही सब कुछ है किड्स के लिए, ऐसी ब्यूटी की बात करते हैं। और जब वो ब्यूटी से परेशान होते हैं तो ये भी कहते हैं ब्यूटी दाउ मस्ट डाई, आपकी डेथ भी होनी है, राइट। मींस ही डजंट, वो ग्रेसियन अर्न की ब्यूटी की बात करते हैं, द ब्यूटी दैट इज परमानेंट, दैट इज बियॉन्ड टाइम, दैट इज बियॉन्ड, उसकी बात करते हैं। ही टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नटिंगल, beauty of the sound. He talks about the beauty of autumn. Means Keats is a poet, is a romantic poet with a difference. For Keats, the beauty is the most important thing, and he enjoys the beauty everywhere. He enjoys the beauty, right? सब कुछ उसको जो है enjoy करते हैं, और इसीलिए Keats को हेलेनिस्टिक कहा जाता है, right? क्या कहा जाता है Keats को? Keats को हेलेनिस्टिक कहा जाता है, इसीलिए हेलेनिस्ट है कीट्स। हेलेनिस्ट का मतलब क्या होता है? कीट्स को जो है शैली ने बोला है कि कीट्स वाज अ ग्रीक, कीट्स वाज अ ग्रीक। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय पीबी शैली, पर्सी बिश शैली। और जब वो ग्रीक की बात करते हैं, व्हाई इज कीट्स कॉल्ड ग्रीक, ग्रीक क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द वर्शिपिंग ऑफ ब्यूटी, राइट। एक्चुअली हेलेनिस्टिक, द वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम हेलेन, and Helen was the very epitome of beauty, and Keats worships that beauty. इसीलिए कीट्स को हेलेनिस्टिक भी कहा जाता है, और हेलेन ग्रीक की थी, इसीलिए भी कीट्स को ग्रीक कहा जाता है, आप ये भी कह सकते हो। और कीट्स जो है अपने ओज में, ओज ऑन अ ग्रेसियन अर्न, he talks about the beauty of Greece, he talk about the beauty of an urn, right। और उसकी अर्न पर दैट पिक्चर जो बनी है वो ग्रीक की है, और उसको अप्रिशिएट करते हैं कीट्स, इसीलिए उनको हेलेनिस्टिक कहा जाता है, इसीलिए उनको ग्रीक भी कहा जाता है। कीट्स वाज अ पोएट एज वेल एज क्रिटिक भी आप कह सकते हैं। कीट्स के क्रिटिसिज्म के जो दो बहुत फेमस चीजें हैं वो ये हैं कि he admired विलियम शेक्सपियर and he criticized विलियम वर्ड्सवर्थ। एक को क्रिटिसाइज करते हैं और एक को एडमायर करते हैं। फॉर विलियम शेक्सपियर he coined the phrase negative capability, right। for Keats, for Shakespeare he coined the phrase negative capability, and for Wordsworth he coined the term egotistical sublime, right। According to Keats, Wordsworth was the victim of his own ego. He wanted to portray his own picture, his own life through his poetry, while Shakespeare has the quality of negative capability. Shakespeare doesn't want to show, to reflect his personality in his works. Instead, he lives the life of Macbeth, he lives the life of Hamlet, he lives the life of Othello, and he lives the life of the characters that he creates, that he invents. And on this ground, Keats appreciates William Shakespeare, saying that he is the master of negative capability, and he depreciates Wordsworth, saying that he has egotistical sublime and that must be rejected, that must be discarded by literary activists or literary artists. क्लियर। तो ये सारी क्वालिटीज थी कीट्स की, जिसके लिए कीट्स जाने जाते हैं। दो पॉइंट्स नोट करके रखिएगा, नेगेटिव कैपेबिलिटी एंड इगोटिस्टिकल सबलाइन। लिख देता हूं, उसको नोट कर लीजिए।
निगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि टू हैव द एबिलिटी टू निगेट वंस पर्सनालिटी व्हाइल क्रिएटिंग कैरेक्टर। ऐसी एबिलिटी होना जिससे आप अपनी पर्सनल चीजों को निगेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, if you have created a character Hamlet, then don't be Shakespeare, just be like Hamlet. Be Hamlet, feel Hamlet, and write the dialogues spoken by Hamlet. Right? Don't make Hamlet your mouthpiece. Instead, be Hamlet and feel like Hamlet. ये होती है निगेटिव कैपेबिलिटी। राइट, निगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब होता है टू एम्पैथाइज। राइट, निगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब होता है टू एम्पैथाइज। एम्पैथाइज का मतलब क्या होता है? टू एम्पैथाइज का मतलब होता है टू हैव द सिमिलर फीलिंग्स। सिंपैथाइज अलग चीज होती है और एम्पैथाइज करना अलग चीज होती है। तो निगेटिव कैपेबिलिटी मींस टू एम्पैथाइज करना, टू हैव द सिमिलर फीलिंग्स लाइक कैरेक्टर्स, वो होता है जो है एम्पैथाइज करना। इसलिए निगेटिव, द टर्म इज निगेटिव बट इट हैज द पॉजिटिव कनोटेशन। इसकी जो मीनिंग है वो पॉजिटिव है, टर्म ही खाली निगेटिव आपको रिफ्लेक्ट होता है, निगेटिव से होता है। राइट, टू हैव द एबिलिटी टू निगेट योर फीलिंग, अपने फीलिंग्स को जो है अपने एटीट्यूड को निगेट कर देना, उसको बोलते हैं निगेटिव कैपेबिलिटी। क्लियर? और जो दूसरा टर्म है इगोटिस्टिकल सबलाइम, उसका मतलब हमने आपको बता ही दिया है। राइट, अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है, जो है और आया है वो निगेटिव कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन क्वेश्चन में लिख देता हूं और फिर आपको उसका जवाब देना है, उसको आपका आंसर करना है। और अगर आप समझ गए ही हैं वैसे फिर तो कोई टेंशन नहीं है, आप तो पेपर में आएगा तो कर ही लोगे। यू आर इंटेलिजेंट एनफ टू मार्क सच क्वेश्चंस करेक्ट। आइए अब हम उनकी पोएट्री पर आते हैं। ठीक है, पोएट्री पर आते हैं हम मिस्टर जॉन कीट्स के। समझ में कुछ ना आया हो तो बताइए। दोज whosoever have joined the class, दीपाली, रेखा, सविता, ऋतुपर्णा, निगेटिव कैपेबिलिटी समझ में आ गई ना, इगोटिस्टिकल सबलाइम समझ में आ गया। एज फार एज योर पेपर इज कंसर्न, तो आपके पेपर में यही पूछा जाएगा कि निगेटिव कैपेबिलिटी का टर्म किसका है, तो उत्तर जॉन कीट्स है। अगर पूछा जाएगा कि इसका यूज किसके लिए हुआ है, तो इसका उत्तर भी आपको पता है कि ये शेक्सपियर के लिए यूज हुआ है। राइट, तो किसके लिए यूज हुआ है ये आपको पता चल गया, किसने यूज किया ये आपको पता चल गया, और इससे बाहर का क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। क्लियर? जैसे ऋतुपर्णा जी कह रही है क्वेश्चन लिख दीजिए, तो क्वेश्चन एक बार तो ये आया है बेटा कि whom did Keats regard as the prime example of negative capability। मैं पढ़ देता हूं, लिख नहीं रहा हूं। whom did Keats regard as the prime example of negative capability, and options हैं जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर एंड पीबी शैली। राइट, ये ऑप्शंस हैं विलियम जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर एंड पीबी शैली। और क्वेश्चन एक बार फिर सुनिएगा, whom did Keats regard as the prime example of negative capability। राइट, प्राइम एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी किसको रिगार्ड करते हैं? कीट्स। ये क्वेश्चन है एक यूजीसी का। एक दूसरा क्वेश्चन भी है और उसकी भी बात कर लेता हूं, आपको बताता हूं कि उसमें क्या आया है। एक सेकेंड, द क्वेश्चन इज ओपनिंग, खुल रहा है। ये क्वेश्चन लिख देता हूं विद ऑप्शंस। क्वेश्चन है निगेटिव कैपेबिलिटी टू कीट्स मीन्स। निगेटिव कैपेबिलिटी का
मतलब क्या है कीट्स के लिए? और ऑप्शन ए है द एबिलिटी टू सिंपैथाइज विद अदर, द एबिलिटी टू सिंपैथाइज with other, ऑप्शन बी है say bad things, ऑप्शन सी है the ability to sympathize, sorry, हाँ say bad things, और नेक्स्ट ऑप्शन है to empathize, और ऑप्शन डी है नोटा, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन है। राइट, देन आंसर इज वेरी मच क्लियर कि इसका आंसर क्या है। आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द निगेटिव कैपेबिलिटी इज, ये आंसर क्लियर है ना? निगेटिव कैपेबिलिटी टू किड्स, आंसर ये ऊपर लिखा ही है, इट मींस टू एम्पैथाइज, तो ऑप्शन सी यहां पर है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर आइए। नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आए हैं देन ये है कि निगेटिव कैपेबिलिटी इज, और ऑप्शन ए है द एबिलिटी टू ओवरकम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, द एबिलिटी टू ओवरकम unpleasant experience, the ability to overcome unpleasant experience, option B is a passive subordination to experience, a passive subordination to experience, option C है a subjective response to experience, and option D is depersonalized empathy with experience. Depersonalized empathy with experience. These are the four options to the question negative capability is. Clear? अब click the right answer. And I don't think that anybody has any problem in marking the correct answer.
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसका करेक्ट आंसर टिक करने में। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया है, कोई भी इश्यू है, then you can raise a question, you can raise your voice through your chat box, through your comment box. I will address your question first, then proceed. जी नहीं, ए नहीं होगा ऋतुपर्ण जी। A is not the correct answer. The correct answer to this question is not A, but the correct answer is D. Depersonalized empathy with experience. Right? You have to अपने पर्सनालिटी को डीपर्सनलाइज करना। पर्सनालिटी को डीपर्सनलाइज करोगे तभी तो आप शेक्सपियर से हैमलेट बन पाओगे। आपकी जो सिंपैथी है, जो आपकी फीलिंग है, जो आपका इमोशन है, और वो तभी जो है सिमिलर हो पाएगा किसी से जब आप अपने कलर को शेड कर दोगे, जब आप अपनी पर्सनालिटी को भूल जाओगे। इसलिए जिसका करेक्ट आंसर है वो होगा डी, डीपर्सनलाइज्ड एम्पैथी विद एक्सपीरियंस। ये इसका आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं ना। फर्स्ट पोएम कौन सी है ये भी हमने आपको बता दिया, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ये पहली पोएम थी किसकी? ये पहली पोएम थी किड्स की। किड्स के दो टर्म्स बता दिए। आइए आगे पोएम पर उनके बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। ये ऑप्शंस आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और फिर से इसको समझिएगा, और फिर कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर एड्रेस करूंगा, इस क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा। ऑलराइट, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट पोएम पर उनके आते हैं। तो उनकी एक पोएम है जिसका नाम था ऑन लुकिंग on first looking into Chapman's Homer. On first looking into Chapman's Homer. On first looking into Chapman's Homer. चैपमैन का नाम कौन कौन जानता है? कि आज कितने लोग हैं जो चैपमैन का नाम पहली बार सुन रहे हैं? और ये चैपमैन था कौन? एक्चुअली चैपमैन जो था, हिज नेम वाज जॉर्ज चैपमैन। जॉर्ज चैपमैन was an Elizabethan dramatist. He was an Elizabethan playwright
एंड ट्रांसलेटर एलिजाबेथन एज का था। नंबर एक बात इसकी ये हो गई जॉर्ज चैपमैन की। नंबर दो, ये वही चैपमैन था जिसने क्रिस्टोफर मार्लो की अनफिनिश्ड पोयम जो थी उसको कंप्लीट किया था। क्रिस्टोफर मार्लो की कौन सी अनफिनिश्ड पोयम थी जिसको इसने कंप्लीट किया था? नाम आपको शायद याद होगा, मैंने आपको बताया भी था। उस पोयम का नाम था हीरो एंड लिएंडर। क्या नाम था? हीरो हीरो एंड लिएंडर। This was an incomplete poem by Christopher Marlowe and it was completed by George Chapman. क्लियर? तो ये कंप्लीशन के लिए जाना जाता। दूसरा ये है कि चैपमैन हैड ट्रांसलेटेड होमर्स वर्क। होमर के वर्क कौन कौन से थे? होमर इज नोन फॉर हिज टू एपिक्स, इलियड एंड ओडिसी। उसके लिए होमर जाना जाता है। और होमर के टू एपिक्स का ट्रांसलेशन किया, सॉरी एपिक का ट्रांसलेशन किया था होमर ने। राइट? किस भाषा में किया रहा होगा? ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज में उसने किया था। एंड द सोनेट, द पोएम इज ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। होमर को जब उन्होंने देखा, होमर के ट्रांसलेशन को, he was overwhelmed by the literal renderings of George Chapman and in appreciation of Chapman he wrote the poem. Right? उन्होंने सोनेट को लिख दिया जिसका नाम था On First Looking into Chapman's Homer. It is a sonnet. Sonnet क्या होता है? You better know. Sonnet is a 14-line short poem. 14 लाइन की एक शॉर्ट पोयम होती है। राइट? एंड दिस सोनेट वाज रिटन इन 1816। 1816 में ये सोनेट लिखा गया था। राइट? इट टेल्स ऑफ द ऑथर्स एस्टोनिशमेंट while reading the works of the ancient Greek poet Homer as freely translated by Elizabethan playwright George Chapman. राइट? तो सिंपल सा ये है कि दिस सोनेट जो है इट इज ऑन जॉर्ज चैपमैन। अब अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि हु रोट अ सोनेट ऑन जॉर्ज चैपमैन, देन ऑब्वियसली आंसर विल बी जॉन कीट्स। इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड हु रोट अ सोनेट ऑन मिल्टन, then the obvious answer is William Wordsworth. It means romanticism जो एक ऐसा भी एज था when the current poets were not only criticizing the previous poets but they were also appreciating. And you know that romantic age went for the ideals to Elizabethan literature. Right? Almost all the romantics worked on the plays of William Shakespeare and they appreciated Shakespeare, and some of them also found out some problems with Shakespeare as well. So instead of going back to the classical period for inspiration, they shifted one more period back, और वो था Elizabethan period, and Chapman was an Elizabethan playwright and translator, and John Keats was astonished after reading the translation of Homer's and described it as a free rendering. और इसलिए in appreciation of him आज he wrote the sonnet all looking into Chapman's Homer. And the sonnet starts with a very famous line, much have I traveled in the realms of gold and many godly states and kingdoms seen. Round many western islands have I been, which parts infinity to Apollo holds. Of one wide expanse had I been told that deep burrowed Homer ruled as his demons, yet did I never breath its pure sense. Until I heard Chapman speak out loud and bold, then felt I like some watcher of the skies, when a new planet swims into his ken, or like a stout courtesan with eagle eyes, he stared at the Pacific, and all his men looked at each other with a wild surmise, silent upon a peak of Darien. Right, so this is the complete sonnet written by John Keats on in memory of the translation done by
जॉन चैपमैन। मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द realms ऑफ गोल्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो अक्सर पूछ ली जाती है। मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द realms ऑफ गोल्ड एंड मेनी गॉडली स्टेट्स हैव आई सीन। यही से लाइन, ये किस पोएम की लाइन है? तो लाइन है सोनेट की ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। क्लियर? आइए नेक्स्ट पोएम पर आते हैं। कीट्स इज बेसिकली नोन फॉर हिज odes and especially his all odes were written in the same year. 1819 was the most prolific year for John Keats. ये भी एक बार क्वेश्चन यूपी के पीजीटी में आ चुका है। द मोस्ट प्रोलिफिक ईयर इन द लाइफ ऑफ कीट्स कौन सा है? 1819 is the most prolific year when he wrote at length. Right? Most prolific period, most prolific year, right, in Keats's life. Right? Most prolific year है जब उनके सॉनेट्स आना शुरू हुए थे एक के बाद एक, और जो कीट्स के इंपॉर्टेंट ओड्स हैं वो मैं एक तरफ से लिख देता हूं नेम उनके, और फिर एक एक के बारे में हम बात करेंगे। राइट? एक एक के बारे में बात करेंगे, कुछ भी आपके पेपर में आ सकता है उनके ओड से। नंबर 1 पर ओड टू साइकी। नंबर 2 ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। Number 3, Ode to a Nightingale. Ode to Nightingale. Number 4, Ode to Autumn. Number 5, Ode on Melancholy. Ode on Melancholy. Number 6, Ode on Indolence. Number 7, Ode to Fancy. Number 8, Ode to Bards या Ode to Poets. Ode to Poets का एक और नाम है Bards of Passion and of Mirth. Bards of Passion and of Mirth. Ode to Neptune. Ode to Neptune. Number 10, Ode to Sorrow. Ode to Sorrow. Ode to the Mermaid Tavern. Ode to the Mermaid Tavern, और फिर Ode to Dinah.
फिर ओड टू फैनी, ओड टू पैन, राइट। ये है कीट्स के इंपॉर्टेंट ओड्स, राइट। जस्ट राइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सभी ओड्स को। Apart from these odes, Keats also wrote a few long poems, a few narrative poems, और उन नैरेटिव पोएम्स में जो नेम आएंगे उस नेम में है सबसे पहले एंडीमियन, नंबर 2 पर है हाइपीरियन, नंबर 3 पर है इजाबेला और द पॉट ऑफ बासिल, राइट। ये सब लॉन्गर पोएम में है। द यू ऑफ सेंट एग्नेस, ये भी सब नैरेटिव पोएम्स में है। You can imagine कि in a short span of life, what did Keats do? छोटी सी लाइफ में 25 साल की एज में कीट्स ने इतना काम कर दिया है कि 200 years के बाद भी he is still relevant and he is taught and researched in various universities till date। अभी तक उन पे रिसर्च हो रहा है और जब भी आप रिसर्च करोगे डेफिनेटली यू विल फाइंड अ डिफरेंट एंगल टू वर्क ऑन, राइट। अलग से आप वर्क जो है पाओगे जिस पर आपको काम करना है। आउट ऑफ दीज ओड्स जो आपको और हमको प्रिपेयर करना है उसमें है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, और फिर ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम हमको आपको करना है। और उसके बाद हमको जो है इसमें एक ओड कोई छूट भी रहा क्या? नहीं। ओड टू ऑटम के बाद ओड टू ऑन जो है मेलंकली, हमको ये भी ओड करना है। But these are the important odes that we have to work on for our examination, and lines are also asked from these odes. So let's start with his most famous one, Ode on a Grecian Urn. Right, Grecian Urn के ओड से हम शुरू करते हैं और फिर एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर है? कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करिए आप, मैं वेट करता रहता हूँ आपके फीडबैक्स का। नो रिस्पॉन्स। Ode on a Grecian Urn। अर्न क्या होता है? अर्न इज अ पॉट, एक अर्न बर्तन होता है, एक ग्रीक का बर्तन है और इसीलिए उसका नाम है कि ग्रेसियन, राइट। ग्रीस से ही ग्रेसियन बना है, राइट। ग्रीस से ग्रेसियन बना है। ग्रीस इज द नेम ऑफ द कंट्री एंड ग्रेसियन मींस द बिलोंगिंग्स ऑफ ग्रीस। जैसे इंडिया से इंडियन, वैसे ग्रीस से ग्रेसियन, राइट। हियर इन दिस पर्टिकुलर ओड कीट्स का जो रोमांटिसिज्म है क्या? वर्ड्सवर्थ ने बोला था कि रोमांटिसिज्म लाइज इन सॉलिट्यूड, रोमांटिसिज्म लाइज इन ट्रंक्विलिटी, रोमांटिसिज्म लाइज इन स्टिलनेस, मीन्स रोमांटिसिज्म lies in shanti, peace, and here urn is the symbol of peace, right। urn is the symbol of peace और एक urn है, सीधा नहीं हुआ है, थोड़ा आर्ट बहुत खराब है।
इस टाइप का एक अर्न है और बर्तन है, और इसी बर्तन के ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी है, राइट। इस पर कुछ पिक्चर्स बनी है एंड द पोएट टॉक्स टू दोज पिक्चर्स, उन्हीं से बातें करता है। और वो कैसी पिक्चर है? इन द वेरी फर्स्ट कैंटो, इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा, एक्चुअली देयर आर टोटल 5 स्टैंजाज, 5 स्टैंजा हैं, 10 लाइन्स ईच के, राइट। तो देयर आर टोटल 50 लाइन्स इन द पोयम, 5 cantos, 5 stanzas of 10 lines each. So when he sees the picture made on the urn, he talks to the picture and says that there is no movement on the जो है in the picture, किसी पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। और जब मूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या है वो? दे आर साइलेंट, राइट। वो सब क्या है? वो साइलेंट है। उस साइलेंस की बात करते हुए कहता है, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। क्या है आप? दाउ आर स्टिल अनरेविस्ड मींस दाउ आर स्टिल not destroyed, thou art still safe, thou have not been touched. And second point पर, thou still means peace, thou still unravished, it symbolizes that आपको रहना नहीं था ऐसा, बट आप अभी भी हो, thou still unravished। और हो क्या आप? बोलता है ब्राइड, ब्राइड अपने आप में बहुत शांत मानी जाती है, शांति पीस के लिए जानी जाती है। ब्राइड कब बोलती है? जब उससे कोई बोलता है, अदरवाइज शी कीप्स मम। दिस इज अ कांसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म, राइट। तो यहाँ पर अर्न हैज बीन कंपेयर्ड टू द फेमिनिस्टिक अप्रोच, उससे फेमिनिज्म फेमिनिस्ट से जो है कह लीजिए वुमन से कंपेयर हो रहा है कि दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस मींस डबली ब्लेस्ड हो, यू आर नॉट एबल टू से एनीथिंग और यू डोंट से एनीथिंग, यू आर बिल्कुल साइलेंट। दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। और इतना ही नहीं, किसकी बोलता है उसको कि दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस, दाउ आर चाइल्ड एंड दाउ आर द चाइल्ड ऑफ साइलेंस। साइलेंस का चाइल्ड कैसा होगा? सुपर साइलेंस, राइट। तो thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, time can't affect you, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है टाइम का, इसलिए आप अनरेविस्ड हो, आप ब्राइड हो, क्वाइटनेस के ब्राइड हो, आप फोस्टर चाइल्ड हो, साइलेंस के फोस्टर चाइल्ड हो, आप जो है स्लो टाइम के। और इतना ही नहीं, जो सिल्वन हिस्टोरियन है, द पास्टोरल हिस्टोरियन जो है, वो भी आपकी ब्यूटी को ऐसे डिपेक्ट करता है और कर भी नहीं सकता। कहता है सिल्वन हिस्टोरियन, दस हु कांट दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आवर टाइम, आई एम एक्सप्रेसिंग योर ब्यूटी मोर ब्यूटीफुली देन अ सिल्वर हिस्टोरियन, देन अ pastoral historian. What leaf-fringed legend haunts about thy shape of deities or mortals or are both? उस पर जो पिक्चर्स बनी है उन्हीं को देखकर कहता है कौन सी डिटीज है ये, कौन सी पिक्चर है, कौन सी हाइफन, तो इन्हीं सब की बात वो अंत तक करता रहता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है ऑफ द ओड, वो लास्ट 2 लाइन्स हैं, और लास्ट 2 लाइन्स हैं, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ है ब्यूटी। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। जिसको आप बोलते हो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट्स ऑल यू नो। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यू नो ऑन अर्थ। That's all you know on earth and all you
need to know. इतनी ही चीजें दुनिया में हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं. और दैट्स ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू need to know. You do not go, you cannot go, or you should not go ahead of truth, ahead of beauty, as there is nothing lies after truth and after beauty. Right? Satyam Shivam Sundaram जो है यही concept है. Whatever is true, that is beautiful, and whatever is beautiful is true, and that is beneficial to us. Right? This is the morale, this is the sense. If the beauty is truth, truth beauty, that's all you know. Right? So he picturizes, he narrates the beauty of the urn, beauty that is made on the urn, and he is overwhelmed. He has been grabbed by the beauty of the urn, and then he expresses his feeling. But he says that the Sylvan historian canst thus express, means apart from the poet, no one is there to express the beauty of the Grecian and to express the beauty of the silent foster child of silence. Nobody has the ability to express the beauty of the bride of quietness. It is the poet, it is he as a romantic poet has the potential, has the ability to express the feeling of the beauty. Right? उसको ये describe करता है. In the next picture वो देखता है कि there is a boy, there is a lad, and he is piping. So he says that in the second stanza, in the second part, heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Means the days that have gone, they were good, but the days that are to become, जिनको अभी आना है, they will be more optimistic, they will be more जो है good की बात करता है, वो और बेहतर होने वाले हैं. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, you soft pipes play on. Continue your music, you can continue your work, don't wait, and अपने आप जो future आएगा, next music जो आएगी, that will be more melodious. And the music that you are piping, जिसको आप बजा भी रहे हो ना, that is not meant for the sensual ear, but here the poet talks about the spirituality. Right? ऐसे कान की बात करता है जो मेड नहीं है, जो हमें दिखते नहीं है, but more endeared, pipe to the spirit deities of no tone. Right? Fair youth, beneath the trees, thou canst not leave. आप पेड़ के नीचे बैठे हो और आप यहाँ से जा नहीं सकते. Thy song, nor ever can those trees be bare. And आपके साथ फैक्ट ये है कि you are sitting under a tree, और जिस ट्री के नीचे बैठे हो ना, it can never shed its leaves. क्यों? Because it is merely a picture. So through the stillness, through the quietness, the poet wants to describe the stillness of time. Right? Beauty of time, उसकी बात कर रहा है. Right? And in the third stanza, he talks about all breathing human passion far above, that leaves a heart high sorrowed and clad, a burning forehead and a parching tongue. Right? In the last stanza, he once again addresses the urn, saying that, "O Attic shape, fair attitudes with breed of marble men and maidens overwrought." How we pronounce E here? E is pronounced E. It is for the purpose of rhyme, rhythm and meter. So don't be confused. जी नोट करवा दूंगा, ऋतु पढ़ना, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, सब बताऊंगा. Thou still unravished bride of quietness. Right? तो ये उनका जो है पहला ओड था, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में हमने कहा कि ये द एंटायर ओड जो है, इट इज डेडिकेटेड टू द स्टिलनेस ऑफ टाइम, इट इज डेडिकेटेड टू the Grecian urn, that is a relic of antiquity and a chronicler of ancient Greek pastoral life. The poet addresses it and asks, what is the legend which is carved on its sides? Right? And he concludes the ode with the famous line, beauty is truth, truth beauty,
दैट्स ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड यू नीड टू नो। और यही लाइन आपके पेपर में कीट से आएगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे उनके जो है ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम और ओड टू मेलंकली की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इतनी बात होगी, तो आप तैयारी अपनी रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो पहले नाइटिंगेल की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे ऑटम की। क्लियर? थैंक यू वेरी मच, गुड लक।